नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपका टीचर उमिदुल मोंडू। तो आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है बायोमोलिक्यूल्स। तो इस बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक के अंदर जाने से पहले मैं हमारे इस बायोस्फीयर में हम देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो as if we take example of us like humans, right? Humans, we have different type. We have plants, right? Even what are the terrestrial animals we see, right? Like dogs, cats. These are the different kinds of animals we see. So before going to this chapter, there is one question it came in mind. क्या हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केमिकल्स यानी कि एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, राइट? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स सेम होते हैं या फिर हम लोग क्या सेम एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं? सो टू आंसर दिस क्वेश्चन तो हमें इस चैप्टर के अंदर जाना पड़ेगा जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो हम सबसे पहले ना ये क्वेश्चन करते हैं कि सबसे ज़्यादा बायोमोलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को कौन से एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, राइट? तो टू अंडरस्टैंड दैट केमिकल तो इसका भी बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन उसके पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो भी एक फैसिनेटिंग अमेजिंग सी बात है कि हमारे बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है made up of non-living atoms and molecules. We as human also, we are made up of non-living atoms and molecules. And the most abundant atom, the most abundant element we see in 98% of living organisms have six elements: carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, nitrogen, calcium. ये जो 6 एलिमेंट है ये 96% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है और वो इम्पोर्टेंट भी है। कौन से नाम है इसके नाम, ये एक नीट एग्जाम एक पेपर में क्वेश्चन में आया भी था। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे ना, जो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है ना, आप शॉर्ट जगह सुन के ये जो इसके जो कार्बन हाइड्रोजन है ना, इनकी जो रिलेटिव abundance है ना, ये is more than this relative abundance of carbon and hydrogen is more relative abundance of carbon and hydrogen. Hydrogen is more in living organisms than oxygen. तो कार्बन और हाइड्रोजन के रिलेटिव अबंडेंस इतना ज़्यादा है कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है? इज मोर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा ही मात्रा में कार्बन और हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर डिफरेंट देखा जाता है। कोई भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, ठीक है, वो सब कार्बन और हाइड्रोजन मोस्टली बने होते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, मोस्टली कोई भी हमें अगर जानना है, कोई भी सैंपल ले लो, अगर हमें सपोज हाँ
बाहर गए और आपने देखा क्या एक पेड़ में, एक मैंगो का पेड़ में मैंगो का पत्ता है, तो आपको पता चला, तो आपको समझ में, अरे भाई ये कैसे, किससे बना है, पत्ता किससे बना है। तो फिर आप हम लोगों का कुछ भी देखो, कोई भी ऑर्गेन उठा के लो, टिश्यू टाइप का स्किन ले, तो हमें आप क्वेश्चन करोगे ये कैसे बना। तो कोई भी एक सैंपल आप ले लें, कोई भी एक सैंपल लेंगे, सपोज टिश्यू सैंपल लोगे या फिर लीफ लोगे, सैंपल टिश्यू लोगे, लीफ सैंपल लोगे, हम ना इसको नेक्स्ट इसमें करेंगे, ये स्पेस नहीं हटेगा इसमें। So you are taking a sample, any sample, skin tissue, yes, tissue, or right. I have taken the sample, okay. Now you want to analyze. अभी आपको जानना है कि इसमें कौन सी एलिमेंट है, ठीक है, या फिर इसमें कौन सी है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो इसको जानने के लिए ना आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं, वो है कि टॉपिक का सब टॉपिक है हाउ टू कॉम्पोजिशन। हमें कुछ भी अगर केमिकल कॉम्पोजिशन एनालाइज करना, सबसे पहले हमें सैंपल लेना है, उसके बाद ना हमें डिफरेंट वेरियस स्टेप्स के थ्रू मालूम करना, अपने सैंपल ले लिया, उसके बाद ना ग्राइंड कर दो इसको, ग्राइंडिंग सैंपल विथ ड्राई फ्लोरोएसिटी, इसको ग्राइंड करके, सैंपल को ग्राइंड करके ट्राइफ्लोरोएसिड एसिड डालते हैं, ठीक है। उसके साथ, और ये कैसे ग्राइंड करते हैं, तो आपने तो घर में देखा ही होगा, ये तो हम लोग का ये वाला रहता है ना, इसमें लोग जिंजर गार्लिक हम लोग कूटते हैं, वैसे ही ऐसा टाइप का रहता है लैब्स में, ठीक है, जिसको मोटर प्रेशर बोलता है। तो इधर तो हम ऐसे डाल डाल दिए थोड़ा थोड़ा करके ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड, ऐसे डाल दिया और इसको ना पीसते हैं। तो इसके बाद एक थिक स्लरी बनी, उसके बाद क्या करेंगे ना, वो स्लरी को ना फिल्ट्रेट करेंगे, फिल्टर करेंगे, फिल्टर करेंगे, और वो भी चीज क्लोथ के साथ, कॉटन, कॉटन को लेके इसको इसका फिल्टर करेंगे ना। तो कोई फिल्टर जैसे अपन करते हैं ना, उसके बाद में दो चीज़ बनती है, एक होता है फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, और ये फिल्ट्रेट क्या होगी, है ना, एसिड, ये जो फिल्ट्रेट होगी ना नीचे जो फिल्टर करके आएगी, वो ना एसिड, जो ट्राइक्लोरोएसिलिक एसिड, और जो हम लोग उसको पीस के जो फिल्टर के जो कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड निकला है, तो वो फ्रैक्शन है, ये ना एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस, वो भी बोल सकते फ्रैक्शंस है, ठीक है। और वो ना, और एक जो ऊपर रहेगा वो है रिटेंटेड, रिटेंटेड जो ऊपर बचा हुआ है, उसको ना अपन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस भी बोलते हैं, फ्रैक्शंस भी बोलते हैं, उसको हम लोग एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे ना, इसके बाद जो मेन चीज़ आएगा कि बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड हमें चाहिए,
तो इसको ना हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक, फिर हम ना आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी कंपाउंड हमें चाहिए। फिर जब हम इसके बाद वाला स्टेप होगा, ये आइडेंटिफिकेशन है ना, इसके अंदर भी बहुत सारे सब स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। लेकिन हम ना ये ना एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, वेरियस बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, हम लोग एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होते हैं डिफरेंट, तो बेस्ड ऑन दैट तो उसकी भी सब टाइप्स है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें, तो वो सब देख के ना हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अच्छे कौन से वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके बाद ना जो हमें फिर निकालना है, फिर आइसो सेपरेट करना है, फिर वो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, तो वो वाली होगी आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और आइसोलेशन मतलब क्या? आइसोलेशन मतलब सेपरेशन, ठीक है, सेपरेट करना। तो अभी ये जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस, रेसिड्यूज, इसमें ना बहुत सारे 100 ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स रहेंगे, लेकिन उनमें से ही हमें अगर निकालना है स्पेसिफिक कुछ, तो हमें उसके बाद ना आइडेंटिफाई करके उसका आइसोलेशन करना है। तो आइसोलेशन के एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है टेक्निक का, आप लोग देखे होंगे, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। आपने शायद ये एक पेपर वाला पेपर क्रोमेटोग्राफी देखा होगा, ऐसे ऐसा वाला एक पेपर रहता है, जो ये एक पेपर रहता है जिसमें ना आपको ना वो पेपर में ना फिर आप मतलब एक सॉल्यूशन रहता है, सॉल्यूशन में डालोगे, फिर एक वो जो कंपाउंड है एक उसका एक टिप आप डालोगे ना इधर, फिर इसकी मॉलिकुलर जो वेट है बेस्ड ऑन डिफरेंट कंपाउंड्स आएंगे, फिर कलर ऑल्सो, फिर ना वो सेग्रीगेट होते जाएगा धीरे धीरे, जितना ये जो पानी ये आगे बढ़ते जाएगा धीरे धीरे होते जाएगा। ये आप लेटर आप ये एडवांस जो कि आप बायोलॉजी अभी इंडेप्थ करोगे तो आप ये सब टेक्निक्स आप सीखोगे हाथ में, ठीक है। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करेंगे, तो इसके बाद ना हम इसके बाद क्या करेंगे ना, एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिटिकल यूज, एनालिटिकल टेक्निक्स बहुत सारे हैं जिसके थ्रू से टेक्निक्स स्ट्रक्चर एनालिसिस, एनालिटिकल टेक्निक्स, डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स है जिससे हम यूज करते हैं ना, जो इसके स्ट्रक्चर है ओवरऑल इस कंपाउंड के, तो वो एक हम लोग को एक स्ट्रक्चर मालूम होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो लास्ट स्टेप है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपाउंड को लेके एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे। तो ये है लास्ट स्टेप जिसमें आपको एलिमेंट के बारे में पता लगेगा कि कौन से एलिमेंट, तो इसके भी बहुत सारे वेरियस टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, दो एग्जांपल। तो हो गया कंबशनल एनालिसिस है, तो जिसमें ना क्या करना है, अब तो नाम से ही आपको पता चलेगा कॉम्बशन में कुछ होगा, हाँ एग्जैक्टली ऐसे कुछ एक सैंपल लेना है आपको, फिर उसके बाद ना एक्सेस ऑक्सीजन में उसको ना कंबशन करना, उसको चलाना। क्या होता है, तो ये कंपाउंड में कार्बन होता है, और मैंने पहले ही कहा था कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, टाइरोजन होता है। तो जो कार्बन होता है, कार्बन ना ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को वाटर बन जाता है। तो उसके बाद वो लोग मेजर करते हैं, उसके बाद पता चलता है ठीक है इतना, फिर क्या क्या एलिमेंट है कि नहीं, अगर वो एक्सेस इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड ये बन भी रहा है कि नहीं, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे बनता है कितना कार्बन है, फिर बेस्ड ऑन दैट दे विल बी टेकिंग द एलिमेंट एनालिसिस। और एक होता है कि एक्सरे फ्लोरेसेंस, एक्सरे फ्लोरेसेंस,
तो जिसमें ना क्या होता है कि आपको एग्जाम्पल लेना पड़ता है, जो एक्सरे और थ्रू हम लोग उसको इरेडिकेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है ना, वो जो भी सैंपल में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो लोग एक्सरे रिलीज करेगा, राइट। सो देन विल measure that, based on that we do the elemental analysis. Next, at the end of everything, right, what at the end of everything what you want to get is the last, जो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है at the last, है ना। तो हो गया, अगर केमिकल अगर एनालिसिस करते हो फिर उसमें हो गया एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है, या फिर कीटोन मिलेगा, या फिर एमाइड्स, ठीक है, अमाइनो ग्रुप मिलेगा, अमाइनो ग्रुप मिलेगा। लेकिन हम अगर जो हमें अभी ढूंढना है कि हमें जो मतलब बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ठीक है, एंजाइम्स, फैटी एसिड। तो ये सब हमें देखना है कि ये सब प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो फिर अभी ये मेन जो जो टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, फैटी एसिड, इस चैप्टर में हम लोग ये सब के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है और जो ज़्यादा पाया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। हम अभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले कार्बोहाइड्रेट्स पर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इसके सबसे पहले और भी कार्बोहाइड्रेट्स के नाम है, उससे ज़्यादा इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दिस इज द मोस्ट abundant biomolecule molecule of Earth। अर्थ में सबसे ज़्यादा ये abundant है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि हम कैसे पता, अच्छा चलो ये आपको क्वेश्चन आया होगा, अच्छा चलो ये कैसे abundant सबसे ज़्यादा है। ये ना आपको अगर याद होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग में एक टर्म पढ़े थे फोटोसिंथेसिस, तो कहाँ से आता है, प्लांट प्रोड्यूसेस carbohydrates, right? Plant produces carbohydrates by photosynthesis। तो प्लांट का फोटोसिंथेसिस के थ्रू से बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है, राइट। इट्स लाइक आप अगर देखोगे तो प्लांट ना 100 बिलियन टन्स, मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट अभी केमिकल एनालिसिस इसमें जाओगे तो डिफरेंट नेम है, जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी, इसको एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी जो भी बोले जाते हैं, ठीक है। इवन कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग और ऑल्सो नोन एज सैकराइड, सैकराइड भी बोलते हैं, ठीक है। सैकराइड्स ग्रीक के वर्ड है सैक्रोन बोल के, जिसका मतलब है स्वीटनेस, वैसा है, ठीक है। फिर ना बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस हम लोग ना उसको क्लासिफिकेशन थ्री नहीं है, थ्री टाइप्स में क्लासिफाई, ठीक है, बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस।
मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इसमें क्लासिफाई। तो सबसे पहले जो वाला कार्बोहाइड्रेट है तो वो है मोनोसैकेराइड, राइट, मोनोसैकेराइड। तो इसको बोलते हैं ना सिंपलेस्ट यूनिट, बस सिंपल यूनिट, ठीक है। तो ये ना सबसे, ये ना हाइड्रोलाइसिस में क्या हुआ, इट कांट बी फास्टर हाइड्रोलाइसिस, इसके ज़्यादा हम बोल नहीं सकते। दिस इज द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मोनोसैकेराइड को भी ना हम लोग दो तरह के केस में देखेंगे। एक तो आप अगर फंक्शनल ग्रुप ले लोगे, फंक्शनल ग्रुप बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो हम ना मोस्टली दो ही देखते हैं। तो एक एल्डोजेस, जिसमें ना एल्डिहाइड ग्रुप अगर होता है तो एल्डोजेस होते हैं, एग्जाम्पल, और एक है कीटोसिस, इसमें ना एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो ये दो डिफरेंट बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, एक में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, एक में कीटोन ग्रुप आता है, ठीक है। तो अगर आप अभी मोनोसैकेराइड को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में भी डिवाइड करना चाहते हो ना, हाँ, और ये और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज ये मोस्ट अबंडेंट, ये मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड है। मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज मोनोसैकेराइड जो है वो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज ही पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद है कि अगर आप देखोगे based on number of carbon atoms, ये डिफरेंट बेस्ड ऑन, आप देखोगे बेस्ड ऑन ट्रायोस, ये पेट्रोस, ट्राइबोस, पेंटोस, कितने कितने कार्बन है बेस्ड ऑन दैट, एक्सोस, एक्सोस। तो हम ना इसके बाद पेंटोस, जो राइबोस है, राइबोस के एग्जांपल हम क्या देखेंगे, तो बहुत फेमस एग्जांपल है एक डी राइबोस एंड टू डीऑक्सी डी राइबोस। एक तो हमें आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड में दिखता है, और एक तो हमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसमें दिखता है, राइट। तो ये हो गया मोनोसैकेराइड। अभी हम ना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो, ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, तो ओलिगोसैकेराइड्स है, दे आर 2 to 10 recurring, they are 2 to 10 monosaccharide units linked by glycoside
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं जो एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के माध्यम से जो लोग जुड़े रहते हैं। इसके तो कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप ले लो डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड ही है कि मोस्ट अबंडेंट डाइसैकेराइड्स आर मोस्ट abundant oligosaccharides, मोस्ट अबंडेंट oligosaccharides, ठीक है। तो सबसे बड़ा डाइसैकेराइड का एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? चीनी, कॉमन शुगर, राइट? सुक्रोज इज कॉमन शुगर, दैट इज चीनी। ये ना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है, ठीक है। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है सुक्रोज। और उसके बाद और भी दो है, और इसका और एक है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। सुक्रोज ये बहुत टाइम एक्चुअली आया है ये पॉइंट कि नॉन रिड्यूसिंग disaccharides. So sucrose is a non-reducing disaccharide, and there are two other disaccharides also. We see mainly maltose and lactose. Okay, so they are made up of glucose and galactose. Okay, they are made up of glucose and lactose. Okay, maltose and lactose, and they both are reducing. Reducing. Okay. They both are reducing. So these are the basic classification of carbohydrates. Okay, and there are other different also, like disaccharides. There are trisaccharides. Okay, tetrasaccharides. Trisaccharides are made up of two made up of three monosaccharides. Okay, and tetrasaccharides also made up of four. Like that, it is there. Next classification what we will study, which is important based on the NCERT, is the last classification, that is polysaccharide, right? Polysaccharides. So what are these polysaccharides? So polysaccharides are basically the polymers. They are the polymers of carbohydrates. They are basically the polymers of carbohydrate, right? So there are mainly of two types. One is homopolysaccharide, and another one is heteropolysaccharide. So homopolysaccharides are made up of recurring monomeric monomers. They are made up of monomers, recurring monomers. Like they are made up of same polysaccharide units. Okay, they are made up of same polysaccharide units. Okay, and they can be branched and unbranched or linear, right? And there are heteropolysaccharides, which are
Here are different movements which are occurring in different movements. Different movements. Okay, so they will be also branched or linear. Okay, they can be of different types of intervals, but they will be of different kind of polymeric subunits. Okay, and monomeric, different kind of monomers and monomeric subunits. Okay, so if you are taking a homopolysaccharide, the biggest example of polysaccharide is starch. Starch, right? Starch. So, as we know, starch is very common. Starch is stored in plants as their food. Okay, stored in plants. And starch is made up of branched, right? Two different monomers, amines. Okay, which is water soluble, and which consists of 15 to 20% of the starch. Okay, and it has a linkage of alpha 1,4,1,4 glycosidic linkage. Okay, and will be linear. It will be linear. And another one starch is made up of amylopectin. Amylopectin, which is water insoluble, and it is consists of 80 to 85% of starch, and it has two glycoside linkage, alpha 1,4 and alpha 1,6. Okay, so there is one important thing about here is okay, and is amylose. It has needs secondary structure. Needs secondary structure. Secondary forms helical in nature. Helical. Okay, helical in nature. So due to this, there is a iodine 2 molecule binds as a binding site. Okay, binding site, and in the you know in the conformation test with iodine, it will give blue in color. Blue color. So if you're having a starch solution and if you're putting iodine, then it will of course give blue in color. So that's why we confirm. Okay, and so this is about starch, and there's several others homopolysaccharides. So there examples are glycogen. So it is stored in animals. Okay, it is stored in animals, and it is more branched than starch. And what we'll see is glycogen is also having alpha 1,4 glycosidic linkage. Okay, it is having only D-glucose. Okay, D-glucose 1,4 glycosidic linkage. Okay, glycogen. Then after that, we can see glycogen is stored in our brains, muscle, liver, right? So if our body needs glucose, right? So what our body has a takes as the energy is glucose in the form of glucose, right? So then what will do is enzyme will go and react with glycogen and break down into glucose, and now after that our body, our cells will absorb. Okay, now the next type of
homopolysaccharide is cellulose. This cellulose also is the most abundant polysaccharide. Okay, cellulose you can see in plant cell wall. Okay, you can see in plant all by which we can the paper is made up of this. You can see in fabric cloths also, cotton also, right? Cellulose. Okay, so these are the biological significance of cellulose, and cellulose it is having beta linkage. It is having beta 1,4 D glucose linkage. Okay, cellulose having beta 1,4 D glucose linkage, and it does not binds to iodine. So it has no interaction with iodine. Okay, and it is having a linear in structure. It doesn't form any helical structure. Next, we'll come to, there is another one is inulin. Okay, inulin. They are fructose. Inulin are polysaccharides, and they are having fructose monomers. Okay, they are having fructose monomers, and there is one that is chitin. Chitin. It's having monomer of acetyl glucose in acetyl glucosamine. Okay, so chitin it is found in exoskeleton. Exoskeleton of arthropod. It is found in exoskeleton of arthropods, and it is very important also. Actually, it came in the NEET previous year questions. 18, and it is having the N-acetyl glucosamine. It is a glycoprotein or amino sugar. Okay? It is having as a monomer, and in heteropolysaccharides, example like heparin. Okay, heparin. Hyaluronic acid. Okay, heparin is also known as anticoagulant. Anticoagulant, right? Heparin, okay, acts as anticoagulant. They are made of hydropolymers, and hyaluronic acid. Okay, they act as a lubricant. So by this, okay, there are certain others also, different types of hydropolymers and polysaccharides are also this, but mostly in our body, yes, you can see this. These are the carbohydrates we can found. Okay, and we can classify into monomers, monosaccharides, we can oligosaccharides, and polysaccharides. Okay, and okay, thank you for the lecture.